The reproductive system. The primary sex organs are the ovaries. Primary sex organs. Ovaries. Here, here ovaries are there. Here of ovaries. Then the duct or the tract. Tract. Oviducts or fallopian tubes. Fallopian. Then single unpaired. China. Cervix is a part of uterus. Cervix is a part of uterus. So उसको हम अलग से नहीं लिख रहे. Vagina. Again, single. This is about internal genitalia, the internal organs, right? So आप यहाँ पे लिख सकते हैं internal. Okay. Then external genitalia. External genitalia. Vulva. Clitoris. Pons. Pubis. External genitalia, जैसे हमने मेल्स में पढ़ा था, it helps in sexual dimorphism. So start with ovaries first. The structure of the ovary. Ovary. Located in the abdomen. Located in the abdomen. Abdominal. Testes were located in pelvic region. So ovaries are located in the abdomen, close to posterior body wall. Posterior body wall. That is towards the vertebral column. पीछे की तरफ. Okay. Just like this. Located close to the posterior body wall. Coverings. First covering is germinal epithelium. Germinal epithelium. From outside to the inside, there are only two, basically. Outside. Germinal epithelium. This is cuboidal epithelium. Cuboidal cells होते हैं. The shape of the cells is cuboidal. Cuboidal epithelium. Then the second layer is the second covering. The second covering is tunica albuginea. Albuginea. These are the two coverings. Tunica albuginea, white fibrous connective tissue. Tunica albuginea, as in the case of males, here also it is made up of white fibrous connective tissue, collagenous. Right? Attachments. Attachment to the posterior body wall. Back wall जो है उसके साथ vertebral column के sides में ये पीछे की तरफ attached होती है to the posterior body wall by mesovarium.
Mesovarium. It's a structure. It's fibrous structure. Fibrous gland. Mesovarium. Fibrous. Then the ovaries are also attached to the uterus. Right? Ovarian ligaments. Fallopian tube. Mesosalpinx. Mesosalpinx. अभी जब हम ये पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हमने फेलोपियन ट्यूब्स लिखा है, ठीक है। जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं इन्हें हम सैल्पिंग्स भी बोलते हैं, SALPINX, राइट। द इन्फ्लेमेशन इज नोन एज सेल्पिंजाइटिस। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सेल्पिंजाइटिस। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था आपको, कुछ नेम्स हैं, कुछ टेक्नोलॉजिकल टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, राइट, जो बेसिकली ऑर्गन के नाम से ही डायरेक्टली डिराइव्ड नहीं है। Like say for example, the inflammation of prepuce is known as balanitis, right? The inflammation of testis is orchitis. So inflammation of the fallopian tubes is salpingitis, right? This mesosalpinx attaches the fallopian tube to the ovary. It is extending between the fallopian tube and the ovary, just like this. This is about the attachments of the ovary with the various organs. Okay, चलिए अब ओवरी का फंक्शन क्या होता है? The function is to produce the gametes. So primary sex organ, the function is to produce ovum, right? But the ovum is formed in a specialized structure, a multicellular structure known as follicle, right? So to produce ovum and follicles. We'll be understanding this कि follicle होता क्या है, ठीक है? इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे हम लोग, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। तो ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन ऑफ द ओवरी, राइट। अब इसके बाद ओवरी की जो डिटेल है उसमें एक चीज आ जाती है, उसको स्टार मार्क करके लिख देते हैं, कॉर्ड्स ऑफ फ्लूजर, PFLUGER, फ्लूजर। These are also known as egg nests. अपनी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट नीट टू में इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एग नेस्ट्स क्या होते हैं, कॉर्ड्स ऑफ फ्लूजर क्या होते हैं? These are series of bubonia attached to outer layers of ovary and extending to under into it or into the interior. Okay.
अंदर को ये हैंग कर देते हैं, ये ऐसा बना देते हैं. Now let us suppose this is the ovary. Ovary is not a perfect spherical thing. It is like something like this. इसका shape कुछ इस तरह का होता है. Just like this. The outermost layer would be the germinal epithelium, the cuboidal epithelium, और इसके अंदर की तरफ इसमें आपको क्या दिखता है? Tunica albuginea. Towards the inside is the tunica albuginea, the fibrous layer. So this is the tunica albuginea. Okay. Now ovary is differentiated into two zones. The outer part, the outer region, let this be the outer region. Okay. Let this be the outer region. ये बाहर वाला region. Let this be the outer region. And then this inner region. The outer region is known as the cortex. किडनी में भी ऐसे ही था. बाहर की तरफ में क्या होता है? कॉर्टेक्स. और इसके जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम मेडुला बोलते हैं. दिस इज मेडुला. Medulla of the ovary is also named as stroma. STROMA. इसे हम स्ट्रोमा भी कहते हैं. ठीक है. Now we were talking about these cords of Flusser, egg nest. ये है क्या चीज? इनकी अपीयरेंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ बाहर की तरफ से यहाँ से इस तरह से जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स टाइप है, बट ये इस तरह से कुछ सीरीज है सेल्स की जो बाहर से अंदर की तरफ एक्सटेंडेड है. इधर से भी ये क्या है? इन्हें हम बोलते हैं कॉर्ड्स ऑफ फ्लूजर या एग नेस्ट. फ्लूजर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, राइट. इस तरह से यहाँ से अलग अलग जगह से ये कॉर्ड्स अंदर को आ रही होती है. और इन कॉर्ड्स में है क्या चीज? उगोनिया है. इसमें क्या है? उगोनिया. अब ये उगोनिया क्या होता है? यहाँ से अगर हम ओवरी को और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो हमको इमीडिएटली गेमेटोजेनेसिस में जंप करना पड़ता है. वी नीड टू जंप इनटू द गेमेटोजेनेसिस पार्ट, राइट. Gametogenesis. Now, gametogenesis in females as oogenesis. Oogenesis, right? नाम है इसका. Gametogenesis in both sexes involves phases. यहाँ पे क्या लिखे इसे? 3 steps. The first step, the growth phase. The first phase is the multiplication phase. Now, in this phase, from the germinal epithelium, several cells are formed. Right. Now, here we'll be discussing the female reproductive system first. Then we'll be discussing about what happens in the males. Right. So, in multiplication phase,
फ्रॉम द जर्मिनल सेल, जिसको हम शॉर्ट में प्राइमोर्डियल जर्म सेल, सेल्स, दिस प्राइमोर्डियल सेल, दिस इज द अल्टरनेटिव नेम, ये भी बोल देते हैं, राइट। द जर्मिनल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म, divides oogonia, two, singular is singular oogonium, right, singular is oogonium. Oogonia are formed before birth. Oogonia are formed before the birth, during fetal life. Fetal life. Right. At the time of birth, there are fixed number of oogonia in the ovary. ओवरी में oogonia, ओवरी के अंदर एक फिक्स नंबर ऑफ oogonia होता है, राइट, एट टाइम ऑफ बर्थ, and the number does not increase further, and the number does not right. It's around 40 million oogonia are there. The second phase is known as the growth phase. Group of oogonia begin and increase in size. That group only one oogonia remains and becomes larger. ओवरी है, तो ओवरी में जगह जगह पर कुछ ग्रुप्स ऑफ oogonia साथ साथ में ये ग्रो करना शुरू होते हैं। उस पूरे ग्रुप में से कहीं एक जगह पे एक ही oogonia बड़ा होता है, बाकी सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। आप ये कह सकते हो कि बाकियों का जो प्रोटोप्लाज्म है वो ये oogonia अपने अंदर खींच लेता है, राइट। दिस स्ट्रक्चर now called प्राइमरी oocyte। तो oogonia में ग्रोथ होगी तो और ग्रोथ से क्या बन जाएगा, प्राइमरी oocyte बन जाएगा। प्राइमरी oocyte is formed due to growth in the oogonia. The third phase. What happens in the third phase? Third phase is known as maturation phase. This is the maturation phase. This maturation phase is divided into two parts, right? Maturation phase, it is phase of meiotic division, meiotic meiotic division. Now the number of primary oocytes, is fixed at puberty. It is in thousands. 40 million, 40 to 60 million oogonia जो थे उसमें से कुछ थाउजेंड्स ही प्राइमरी oocytes रह जाते हैं, बिकॉज कुछ oogonia डीजनरेट हो रहे होते हैं।
अब ये जो oocytes हैं, प्राइमरी oocytes हैं, इनमें मैचुरेशन फेज होगा, एंड दिस मैचुरेशन फेज इज अ फेज ऑफ meiotic division, right? The meiotic division does not get completed in, yeah, at a time. Does doesn't get completed. Does not get completed. It begins, but it's arrested or stopped at protein stage. This is meiosis one. Meiosis दो steps में complete होता है, meiosis one and meiosis two, right? So ये जो डिप्लोटीन स्टेज है, meiosis one, meiosis one और meiosis one में भी it is stage phase one, meiosis one is the stage. meiosis जैसे हमने कहा आपको, साइड में लिखते हैं, meiosis and mitosis are completed in four steps. In stages. The first stage is known as prophase. Second is known as metaphase. Third is known as anaphase. Fourth is known as telophase. चार phases होते हैं, चाहे meiosis कह लीजिए चाहे mitosis कह लीजिए, right? Meiosis is divided into meiosis one and meiosis two. Each having four stages. meiosis वन में प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन. meiosis टू में प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टीलोफेज टू. तब कहीं जाके meiotic डिवीजन कंप्लीट होता है, राइट? Coming back to this third point again, it is a phase, the maturation phase is a phase of meiotic division. But this meiotic division does not get completed. It does not get completed. ये पूरा complete नहीं होता. Meiosis one, meiosis two पूरा complete नहीं होता. The primary oocyte is arrested. It is arrested at diplotin stage of meiosis, which is a stage of prophase one. meiosis one का prophase one की एक सब स्टेज है, राइट? अगर हम प्रोफेज वन को स्टेज बोले तो ये क्या है? इट इज बेसिकली अ सब स्टेज of prophase one of meiosis one. Prophase one is divided into phase one subdivided protein digotin and pachytine
protein. Finally, there's a stage known as dikinesis. प्रोफेज 1 की ये 5 स्टेजेस सब स्टेजेस होती है, ठीक है। उसमें से अब मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हुआ, लेप्टोटीन हो गया, जाइगोटीन हो गया, पैचिटीन हो गया, बट डिप्लोटीन में मियोटिक ये प्राइमरी oocyte आके अटक गया। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, the primary oocyte is arrested at the primary oocyte is arrested at protein stage of cis joint. The primary oocyte is arrested at diplotin stage of meiosis 1. Right? So these are the phases which are common to gametogenesis, both in males and females. Multiplication phase would be there, then growth phase would be there, then maturation phase would be there. Right? Now, moving ahead. The follicle. Mammals or the mammalian ovary produces Graafian follicles. The scientist D. Graff described D, जिनके नाम पे हम ये follicles का नाम देते होते हैं. The mammalian ovary produces Graafian follicles. So Graafian follicles is an exclusive feature of mammals only. Graafian follicles would not occur in amphibians, reptiles, birds, or fishes. Right? It is an exclusive feature of mammalian ovary. The follicle mass cells having a central cavity is a simple definition of follicle. The thyroid gland has follicles. Thyroid gland in the throat region has follicles. Right. So this is the basic definition of the follicle. Follicle is a mass of cells having a central cavity. Okay. This has an outer bounding layer. ये बाहर से कवर्ड होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल्स हैं और बीच में कैविटी है, बाहर से भी एक कवरिंग होती है। नाउ ग्राफियन फॉलिकल्स, ovarian follicles, ऐसे ovarian follicles begin develop oogonia वाली स्टेज से फॉलिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं। राइट, mature follicle is called graphene follicle. Graphene follicle. Right, around here cells of the stoma
begin to collect. Stroma के जो cells हैं, stroma is a part of the ovary. So around the oogonia, certain cells, certain number of cells, they begin to collect around the oogonia, right? Outermost layer of cells form fibrous layer called theca interna, externa. Inner cells, distinct layer theca interna. This structure is called primary follicle. That is known as the primary follicle. The oogonia inside the follicle प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte. अभी हमने पढ़ा था oogonia से क्या बन जाता है, प्राइमरी oocyte बनता है. तो वो बनता कहाँ पे, वो फॉलिकल के अंदर बनता है, राइट. एट दिस स्टेज another layer gets differentiated inside theca externa, theca interna. सबसे बाहर फॉलिकल में सबसे बाहर क्या था, थीका एक्सटर्ना, उसके अंदर थीका इंटरना. ठीक है. अब क्या हुआ, कि जो थीका जो oogonia था, इतने में वो oogonia इसमें कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो गया. नाउ दिस oogonia फॉर्म द प्राइमरी oocyte. जब oogonia ग्रो करके प्राइमरी oocyte बना रहा होता है, उस समय थीका इंटरना के अंदर एक और लेयर डिफरेंशिएट हो जाती है, राइट. Another layer gets differentiated inside theca interna. This is called, this layer, membrana granulosa. Granulosa. This is secondary follicle. This is the secondary follicle. ओवरी के अंदर ये फॉलिकल्स बन रहे हैं. सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल बना. प्राइमरी फॉलिकल क्या है, इसमें थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना है. जब मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा लेयर भी बन जाती है तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल. इनसाइड द मेम्ब्रेना granulosa, cavity begins to form. Cavity begins. Cavity called antrum. A-N-T-R-U-M. Has a fluid. This cavity is not empty. It has a fluid called liquor. That is liquid. Folliculi. The liquid inside the follicle. At this stage, follicle now called tertiary follicle. Tertiary. Right. तो अब एक तरफ फॉलिकल्स बन रहे हैं और फॉलिकल्स के अंदर oogonia में चेंजेस आ रहे हैं. तो अभी तक क्या बना, प्राइमरी oocyte. अब oogonia कब बनना शुरू हुआ था, बर्थ से पहले. ठीक है. एट द टाइम ऑफ बर्थ there is a fixed number of oogonia in the ovaries. At puberty there is fixed number of primary oocytes. Right? Puberty is the stage of sexual maturity when the reproductive life of the female begins. Right. Now, after attaining puberty, in each month,
one primary oocyte would get converted into secondary oocyte, and the follicle would become mature. Mature follicle is known as Raphian follicle. So note करिए, we have got just 1 minute, less than 1 minute.